Okay, good afternoon, class. So today we'll discuss file handling, and the agenda of today's lecture is to discuss file stream classes. Then we will learn how to open a file. We will see how we can deal with a single file in one code and how we can deal with multiple files in a single code, right? So we'll see all those things. So first, let's understand what are file stream classes. Till now, I assume that you are well aware of IOStream class. Yes, all of you? So what is an IOStream class? Just to revise you. Suppose this is your program, right? And your program wants to communicate with an input device. And later on, it wants to display something on an output device, right? And in this case, both the devices, input and output devices, these are console. Console means taking input from keyboard and writing something on monitor. So I'm considering it as console. These are console devices. So if your program wants to communicate with input device, then we in C++, we have a default input stream. It provides us a default input stream. And the name of that stream is cin. So whenever you want to take input, whenever you want to take something input from a keyboard, you write the statement cin like this. Okay. Maybe you are taking name, and name is some variable that you have already declared. Okay, like this. So it's working fine, but this is predefined. Okay, this cin, you can say it is an object of iStream class, or you can say it is a stream. You can say it is an object of iStream class. It is a stream, or it is a stream. Okay. The way we used to call variables, class variables become objects. Similarly, objects of iStream class, IOStream class, objects of iStream class, OStream class, IOStream class, these we term as streams. Okay, streams. So the cin stream and cout stream are predefined. ये हमें पहले से ही मिली है, default. Later on, your program wants to display something on monitor. Then how you write it? Yes, you write it as like this. Suppose you write this, cout high. Now this will be printed on monitor. Now from where this cout comes, it is available to you already as a default output stream. So what it will be? It will be an object of OStream class. Okay. But one more thing, the main class is iOS class. Okay. Then there are other classes that are derived from iOS class. These are iStream class. You know, there is a class iStream that is inherited from iOS. It is a base class. Okay. It is a base class. Then OStream class also inherits from iOS class, and IOStream class also inherits from base class. And in all of your codes, you must have noticed that we include IOStream file in our code. Why? Because we are using cin, cout, and what are these? These are objects of IOStream class. And where these classes have been defined? These classes have been defined in the header files. Got it? Similarly, now this is all about IOStream file. So this we have discussed already. But when this is true when your input and output devices are consoles. Now, what will happen if your program wants to communicate with some file? Suppose there is a file. My program wants to communicate with this file. Where is this file located? The file is located on the disk. And your program wants to take input. It wants to take an input from a file that is located from a disk. So in this case, what is the input device? The input device is this file. And this is your program. Your program is same. It is a .cpp file. But what is changing here? The device is changing. The type of device has changed. Initially, it was a keyboard. Now it is a file. So how can this program communicate with the file? Program is always CPP and devices may change. So there is an interface. Okay. There is an interface that allows your program to communicate with the devices. And that interface is a stream. Okay.
अभी तक हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि सी इन सी आउट पहले से ही डिफाइन करके रखी हुई हैं, ये भी स्ट्रीम्स ही होती हैं बट ये हमें डिफॉल्ट मिल जाती हैं, सो वी नीड नॉट टू बॉदर. बट नाउ आई वांट टू कम्युनिकेट विद दिस फाइल, सो आई हैव टू क्रिएट अ स्ट्रीम. Okay, so we will create a stream. If you want to communicate with a file, you want to take input from a file, you will create some input stream. Again, if you want to, if your program wants to write some data to a file, what you have to do, you have to create some output stream. Okay, how will you create these input stream and output streams? Basically, streams are object of stream classes, and for files the stream classes are these. These are stream classes for creating streams for files, communicating with files. If stream, off stream, f stream, and these are inherited from f stream base. It is a base class, and these are inherited from f stream base class. F stream base class is inherited from iOS. So there are some functions. It means f stream base is inherited from iOS. तो इसके अपने कुछ functions होंगे, but it is also using the member functions of iOS class. Getting my point? Again, this IO stream file, it is inherited by f stream class. तो IO stream के जितने भी member functions हैं वो f stream में भी हैं, f stream के भी अपने भी कुछ member functions होंगे. So this area is IO stream and this area is f stream. So if you want to communicate, if your program wants to communicate with files, then you have to create streams using classes. Which classes? If you want to create input stream, you have to create a stream using if stream class. If you want to create an output stream, then you will create a stream using off stream class. Or you can use f stream to create a stream which you can later on define as an input stream or output stream. ठीक है, अगर आप इसको यूज करके स्ट्रीम बना रहे हो तो वो एक इनपुट स्ट्रीम होगी बेटे. अगर आप इसको यूज करके स्ट्रीम बना रहे हो वो आपकी आउटपुट स्ट्रीम बनेगी. लेकिन अगर आप इसको यूज करके स्ट्रीम बना रहे हो तो आप उसको बाद में बता सकते हो कि इनपुट स्ट्रीम है या आउटपुट स्ट्रीम है. Is this clear, this concept? Yes, it is bit theoretical. Okay, so not spending much time here. We will now learn how we can open a file. So there are two ways to open a file. Okay, there are two ways to open a file. One way is constructor function, and the another method is we can use open function. We will discuss all these in detail. So first, let's discuss constructor function. Now, if you want to open a file, tell me what you need. What is your first requirement? You need a file name. Yes or no? You need a file name. Okay. If you have a file name and you want to open a file, the second thing that you need to know is the mode. Whether you want to open the file for writing something to a file, writing means output, or if you want to read the file, if you want to open the file for reading, it means you are taking input from the file. So when you are aware of these two things, then you can open a file. So let's suppose that I want to read from a file, okay? Read from a file. This is my program. This is a file. Say I'm taking a file जिसका नाम data है. Okay, data is name of a file. Please note this. Data is name of a file. This is file name. And where it is located on disk. I want to take input from this file, but here I need to create an input stream. First, you will create an input stream. How to create input stream? You will write if stream. If stream is used to create an input stream. Then you have to give a name to the input stream. What is the name of input stream for console? Cin, है ना? So we can give a name like fin. आप कुछ भी नाम दे सकते हो बेटे. It is your choice.
Generally, if I'm creating an input stream, I will take the names like INF या FIN. If I'm creating output streams, I will keep the name OUTF या FOUT, just for my readability and easy code, है ना? So here I'm creating an input stream, so I will use if stream class and then I'm specifying the name. Exactly the same way you create object and class. Class name लिखते हो बेटे आप, उसके बाद you write the object name, है ना, जो आप object बनाना चाहते हो, ऐसे ही करते हैं ना. Exactly same way I'm writing the class which is used for creating an input stream and then I'm specifying the name of the stream. Constructor में क्या करते हो, जब constructor method use करते हो, what you do, you write class name, object का नाम, bracket में उसकी initial values, right? ऐसे लिखते हैं कि नहीं जब constructor use करते हैं. तो यहाँ पे bracket में what I will specify the name of the file. Now what's happening? There is a program, it has been connected to a file named data through an input stream and the name of that stream is FIN. Okay, is this clear now? इतना समझ में आया आपको? Yes, ma'am. So मैंने यहाँ लिखा char name, okay, and if I'm reading something from keyboard, कैसे लिखते हैं? Name, like this. Now I have connected my program with the file and the name of the stream is FIN. So if I want to read from the file, what I will write? FIN name. Name ऊपर आपने कुछ define कर रखा है. So what it will do? It will read, it will open the file. Suppose this is your file. यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है XYZ. So that will come into this name. And after this statement, you can write cout name so that you can show कि आपने file से क्या read किया. This thing is clear or not? Now suppose I have a program, okay. I want to communicate with the file data and I want to write something to this file. I want to write, it means I want to output to this file. You cannot do this directly, you have to create, yes, an output stream. How you will create an output stream in your code? You will create a stream, output stream by writing of stream, the name of the of stream. Suppose I'm taking the name FOUT and in the bracket you will provide the name of the file. Now what's happening here? This file will be opened, not on the screen, okay? It will connect your program to this file. So you can write to this file. You can write to this file. How you write on the monitor? You write like this. Cout, maybe hello. ऐसे लिखते हैं. So if I want to write hello to this file, I will write stream name and the same grounds on same grounds like this. Okay. One important thing that you need to remember is, suppose this piece of code is in one program, okay? Now what will happen here? If this file does not exist, the file will be created, है ना? But if the file exists, if the file already exists and there is some content in this file, that will be erased automatically. It will be overwritten. Got it? You run this code one time. Next time you change this statement, write something else. What you will notice that previously you write hello in data file, but now the contents will be changed to whatever you write here second time. They will be overwritten. Okay, so this is how you create an output stream, initialize it, and put some data in the file. This is how you create an input stream, taking data from a file and writing something to file. Now, once you are done,
Suppose I just wanted to write hello in this file. Now I'm done with it. I don't want to write anything else. I want to close this. I want to break this. I do not want my program to connect with this data file. So what you will write, f out dot close. It will simply close that output stream connection with your program. So after this statement, if you try to write f out ऐसे करके, it will not work. Why? Because it will not work, okay? क्योंकि आपने इसको close कर दिया है. Got it? ये clear है आपको? We will do all this with code. So currently what we were discussing, we are discussing constructor function. Let me just complete another method of opening a file, which is using open function. Once I discuss this, then I will switch to the coding part. ये open function क्या है? आपको समझ में आ गया? F stream, off stream, ये सब classes हैं. ये तीनों classes हैं बेटे. And these three classes are used to create streams. Okay. And what is this open function? It is a member function. It is a member function like any other member function you know. Just like any other member function that you are aware of. Exactly the same way it is a member function in these classes. Okay. So if you are using this open function to open a file, then there is a method you will write. Suppose I'm writing, suppose I want to create an output stream, okay? So अभी मैंने आपको बताया कैसे create करते हैं. You will write off stream. Now what's happening? There is your program and there is some file. And you have created an output stream. But we have not currently linked your program with any particular file. ठीक है, अभी सिर्फ एक stream object create हुआ है. A stream object has just been created, but it has not been connected to any particular file. Okay, initially we were providing the file name here only. So how you can do that? You will write now outf dot open, and the arguments to this open function is file name, like this. This is how you use open function to create an output stream between a program and a file. Basically, both these steps are equivalent to this. यहाँ पे हमने जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट किया, then and there we initialize it with file name. But here we have not initialized it. We have used a member function. We have invoked a member function. Similarly, जो मैंने लिखा था ना, outf dot close. Close is again a member function. Okay, close is a member function. And you know how you call a member function? You never call member function by its name. You always use object and dot operator to call a member function. So if you are using any member function that belongs to these stream classes, then you will invoke those member functions by any जो भी आपने particular stream object बनाया है. Okay. Here I want to open a file, so I'm opening it like this. Similarly, अगर आपने एक input stream का object create किया है, तो आप file को open कर रहे हो for reading, you can do it like this. So both these steps are equivalent to this. Is this fine? Yes? Speak up. I've told you that whether you create an input stream or an output stream, you give argument in open function call file name. है ना? Here INF is your input stream
and outf is your output stream. Basically there are two arguments in open call. ओपन में मैंने यहाँ पे आपको एक ही आर्ग्यूमेंट दिखाया, ठीक है, दोनों जगह पे, आउटपुट स्ट्रीम में भी और इनपुट स्ट्रीम में भी, बट एक्चुअली में इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं. जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज फाइल मोड, बट वी विल डिस्कस इट लेटर. ओके, फाइल मोड होता है बेटे. मोड मीन्स आप फाइल को किस मोड में ओपन करना चाह रहे हो. यहाँ पे आपने फाइल को इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ ओपन किया है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट मोड अपने आप चला जाता है, विच इज इन. इट मीन्स यू हैव ओपन द फाइल फॉर रीडिंग ओनली. When you are opening any file without specifying the mode, the default mode is reading only. When you are opening it with an input stream object. If you are opening any file with a stream object of output O stream type, off stream type, then the file mode is by default iOS out. You need not to specify the modes. Okay. But there are other modes that we can specify. If you are not specifying any modes, then these are taken default. This mode is taken when this particular stream object is of output type, and this mode is considered as default mode when you are opening a file using a stream object which is of input stream type. Is this clear? Please write in chat box, or otherwise I'll proceed with the code. If you have any doubts, please ask. Now here I'm sharing a very simple code with you. In this code, what we will do, we will write to some file and then we will read that particular file. जिसमें पहले हम एक फाइल को ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे कुछ, फिर जो हमने लिखा उसको हम रीड करेंगे. ठीक है, मैंने ये सेम कोड कई बार रन किया है, तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इस नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है. ठीक है, आप अगर ये सेम कोड को रन करोगे, मुझे लगता है मैंने आपकी क्लास के साथ आज के जो कोड्स हैं वो पहले ही शेयर कर दिए हैं. यस, आ गए हैं आपके पास? यस मैम. हाँ, सो दैट्स गुड. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रन दीज कोड्स, बाद में कॉपी करके चला के देख सकते हो. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड. नाउ आई एम यूजिंग stream classes, so for that I have to include the fstream header file, but I'm also using console input output, C in C out भी use कर रहे हैं, so I have to include iostream header file also. iostream, क्योंकि जो iostream ostream classes हैं वो कहाँ define है बेटे? iostream file में define है. ठीक है, तो मुझे iostream की जरूरत भी है और fstream की जरूरत भी है. नेम स्पेस std हमें क्लियर है. So what I'm doing in this line is I'm creating an output stream, है ना? What is the name of that output stream? outf. How to create? You have to specify the class name. एक तरीके से ये क्लास नेम है, ये ऑब्जेक्ट नेम है जो आप दे रहे हो, बट अब हम स्ट्रीम की टर्म में बात कर रहे हैं. सो आई एम क्रिएटिंग अ स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम टाइप. ठीक है, and I am providing the initial value which is the file name in this case, and that is item. So what will happen after this line? जैसे ही कंपाइलर ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ये जो आपका प्रोग्राम दिख रहा है आपको main.cpp, ये जो मेरा प्रोग्राम है, it will be connected to a file whose name is item, and there will be an output stream, and the name of that output stream will be outf. So my program is now able to write anything on this file. Okay. You can also write a definition for a stream. You can also say it is a sequence of bytes. Okay. इंटरफेस भी कह सकते हो, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स भी कह सकते हो. ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी आपको बुक में से या स्लाइड्स में से देखनी पड़ेगी. ठीक है, आना भी चाहिए ना प्रॉपर डेफिनेशन. जस्ट गो थ्रू बुक और स्लाइड्स टू क्रैम few definitions like that. After this line, this happens. मुझे इस फाइल में लिखना है, बट क्या लिखना है वो मैं यूजर से लेना चाह रही हूँ. मुझे कोई नाम लिखना है फाइल के अंदर. So I'm taking that name in a character type of array.
I have declared a variable name which is of array. Array है, character array है. Length is 30 bytes. This is how you take input from the user. Keyboard. Cin. तो जो भी आप input कराओगे बेटे keyboard से, that will get stored in name. But now I want to write this name in the file item. अगर आपने इस नेम को कंसोल पे लिखना होता तो कैसे लिखते आप? आफ्टर दिस लाइन यू वुड हैव रिटन cout yes नेम. ये कहाँ डिस्प्ले हो जाता बेटे? मॉनिटर पे. बट नाउ आई वांट टू डू नॉट वांट टू डिस्प्ले इट ऑन मॉनिटर, आई वांट टू राइट इट ऑन द फाइल. सो एग्जैक्टली सेम वे, बस cout की जगह आपने क्या लिखना है? आउटपुट स्ट्रीम का नाम. ये कौन सी आउटपुट स्ट्रीम है? जो आपके प्रोग्राम को फाइल के साथ कनेक्ट कर दी है. सो इन दिस वे आई हैव रिटन, सपोज मैंने नेम दे दिया, मैंने अपना ही नाम दे दिया. नहीं, ये आइटम नेम है, रुको. मे बी बुक. ठीक है. सो व्हाट विल बी रिटन इन दिस फाइल? ये लिखा जाएगा फाइल के अंदर. एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी बेटे, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है. ये मैंने आगे फालतू से स्पेस दिखा दिया. तो दिस विल बी रिटन. ये सब लिखा जाएगा \n तक. अब देखिए मैंने \n भी लिखा है बेटे. गॉट इट? यस. तो मान लो नेक्स्ट टाइम आप जब इस कोड को रन करोगे एंड इफ यू आर राइटिंग समथिंग एल्स टू दिस फाइल, ऑल दिस विल बी इरेज्ड. ओके, इरेज्ड. उसके बाद मैंने यूजर से क्या लिया? कॉस्ट. मुझे इसका कॉस्ट भी डालना है. वो मैंने एक फ्लोट वेरिएबल में कीबोर्ड से ले लिया. लेकिन अब मुझे वो कंसोल पे नहीं दिखाना, मुझे कहाँ डालना है? वो फाइल के अंदर. सो नाउ इट विल राइट कॉस्ट. ठीक है. नाउ आई एम डन. लिख लिया मैंने जो लिखना था. सो आई वांट टू क्लोज इट. सिंपल, क्लोज इट. Now I want to read from this file. I want to read from this file. So you have to, मुझे यहाँ से डेटा चाहिए. It means you want to create some input stream. How to create input stream? You will create a stream object using if stream class. So उसके लिए क्या लिखेंगे? if stream name of, जो भी आप नाम रखना चाहते हो आपकी मर्जी है. ब्रैकेट में मैंने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए. देन सीन कैसे किया था बेटे? सीन ऐसे किया था. ये कीबोर्ड से डेटा लिया था. अब हम फाइल से ले रहे हैं. सो एग्जैक्टली सेम वे आई हैव स्पेसिफाइड दिस. जो आप फर्स्ट लाइन रीड करोगे वो किस में आ जाएगी? इसमें. इसके बाद आप कॉस्ट रीड करोगे तो वो किस में आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा. गॉट इट? यू कैन इग्नोर दिस लाइन, मैंने ऐसे लिख रखा है \n. जो भी मैंने रीड किया फाइल से, आई वांट टू डिस्प्ले इट नाउ ऑन द मॉनिटर. सो आई एम यूजिंग cout. Item name, item cost. Once I am done reading, I want to close this file. So I will write inf.close. Okay. It is not at all tough, not at all complex. So what you need to do for this topic is you need to prepare it because things are new. Initially, C in, cout, we need not to create. They were available by default. But now we have to work with this streams also. So you need to read, learn, try, and then finally you have to prepare a few set of questions. Okay. So shall I clear this? Speak up. Okay. Any doubts in this code, bete? I'm trying to run it, है ना? Just give me a minute.
इसको रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, इट इज आस्किंग मी द आइटम नेम। ठीक है, अब मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ एक बार। लेट मी शो यू द फाइल ऑल्सो। दिख रही है बेटे फाइल? यस, speak up. Are you able to see it? So if you run this code again and let me just run it. Okay, I'll give some other values. We will see that the contents will change. So I'm giving here 10, maybe 100. Okay, so let's see if just wait. ठीक है बेटे, दिखा आपको? Contents got changed. So this was how you open a single file and how you put input and take write to the file and read from the file. And second thing, we have used here constructor function we have used. But now what I want is I want to use open function. Okay, I want to use open function. ये भी बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है बेटे, very simple code. We will first understand it. अब आपको ये समझ में आता है कि मैंने क्यों लिया यहाँ पे एफ स्ट्रीम इंक्लूड क्यों किया है। ठीक है, नाउ आई हैव क्रिएटेड एन आउटपुट स्ट्रीम, उसका नाम क्या रखा है, एफ आउट। उसके बाद देख रहे हो आप ये ओपन फंक्शन, मैंने अब यहाँ पे साथ के साथ फाइल का नाम नहीं दिया कि मैं किस फाइल के साथ कनेक्ट करना चाह रही हूँ, मैंने नाम नहीं दिया, मैंने यहाँ पे ओपन फंक्शन यूज किया है। सो आई हैव रिटन एफ आउट डॉट ओपन। कौन सी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं हम, कंट्री फाइल को। मैं कंट्री नाम की एक फाइल है जिसको मैं ओपन करना चाह रही हूँ, मैं उस फाइल के ऊपर आउटपुट करना चाह रही हूँ। ठीक है, so what this statement will do, this statement will connect the file country to f out. Okay, आप चाहो तो ये ना दो, ये देने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे दिया कि इस फाइल को सिर्फ मुझे राइट मोड में ओपन करना है। अगर आप इसको नहीं दोगे, अब यहाँ पे आपने एक फाइल को किसके साथ कनेक्ट किया है, एक आउटपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्ट किया है। डिफॉल्ट मोड iOS डिफॉल्ट मोड वो है जो मैंने अभी इरेज किया है। तो लिखो चाहे नहीं लिखो, इट वोंट गिव यू एन एरर, इट इज अ डिफॉल्ट मोड। ठीक है, बट मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया जस्ट लाइक दैट। अब ये लाइंस लिखने के बाद क्या होगा, जो ये मेरा प्रोग्राम है वो उस प्रोग्राम की कनेक्टिविटी हो गई है किसके साथ, एक कंट्री नाम की फाइल के साथ। ठीक है, नाउ आई एम एबल टू राइट एनीथिंग टू दिस फाइल। लिखने का क्या तरीका है, लिखते कैसे हैं बेटे, यस एफ आउट, जैसे सी आउट लिखते हैं एफ आउट, उसके बाद जो भी आपने लिखना है लिख दो। मैंने 3 कंट्रीज के नाम डाल दिए अलग अलग लाइंस में। ठीक है, सिंपल। उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर मैंने एक नई फाइल खोली। You see here, I have connected the same output stream for some I'm using the same output stream for some other file. Why this is possible? Because I'm using open. आपने एक बार आउटपुट स्ट्रीम को बना लिया, अब आपने एक बार अपने प्रोग्राम को इसके साथ जोड़ दिया,
बाद में आपको ये नहीं चाहिए तो आपने इसको क्लोज कर दिया, लेकिन आपके पास स्ट्रीम तो पड़ी है ना अभी भी। आपके इस प्रोग्राम के पास एक आउटपुट स्ट्रीम है, आप इसको यहाँ से तोड़ के एफ आउट को किसी और के साथ जोड़ दो, रहेगी ये आउटपुट स्ट्रीम ही। ओके, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कनेक्ट इट टू मल्टीपल फाइल्स इन योर कोड, कभी किस फाइल के साथ कभी दूसरी फाइल के साथ। बट जब दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो तो पहले वाले को क्या करोगे, क्लोज करोगे। ठीक है बेटे, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अब फाइल को दोबारा से कनेक्ट किया किसी और फाइल के साथ। ठीक है, मैं यहाँ मोड नहीं दे रही हूँ बट इट विल वर्क फाइन, ये वाला आप यहाँ पे डिफॉल्ट एज्यूम करके चलो। ओपन में आपने याद रखना है 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बेटे, एक फाइल का नाम, दूसरा फाइल का मोड। ठीक है, अब मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया, इसके अंदर मैंने ये सब डाल दिया, कैपिटल्स डाल दी, फिर मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड 2 फाइल्स, वन इज कंट्री एंड अदर इज कैपिटल। कैसे क्रिएट हुई, मेरे कोड से क्रिएट हुई हैं, और मैंने इनके ऊपर डेटा भी कैसे डाला है, थ्रू प्रोग्राम। हमने टाइप नहीं किया, प्रोग्राम से ही आउटपुट करवाया है। एंड नाउ माय ऑब्जेक्टिव इज, यस माय ऑब्जेक्टिव इज क्लियर टू यू, मैं इन दोनों फाइल्स को रीड करना चाहती हूँ, आई वांट टू रीड दीज फाइल्स। बेटे आप फाइल्स को रीड करोगे, फाइल के अंदर कुछ आपने स्ट्रिंग्स रखी हुई हैं, से इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, इसको कहीं रीड भी तो करोगे, तो मैंने उसके लिए ये डिक्लेयर किया है। फाइल में से मैं जो भी रीड करूंगी वो कहाँ आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, रीड करने के लिए आपको एक इनपुट स्ट्रीम भी क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आप इनपुट स्ट्रीम क्रिएट कर लो, पहले उसे कंट्री वाले के साथ कनेक्ट कर दो, बाद में हम इसको क्लोज करके यस कैपिटल वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे। हम ये सीख लेते हैं फाइल को रीड कैसे करना है। मैंने इनपुट स्ट्रीम बनाई, इनपुट स्ट्रीम को मैंने ओपन किया, डिफॉल्ट मोड इनपुट, इनपुट ही रहेगा, रीड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको इनपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्ट किया है, तो ये चाहे दो चाहे ना दो इट विल वर्क फाइन। ये मैं अपने लिए डिस्प्ले करा रही हूँ। आप फाइल को कब तक रीड करते रहोगे बेटे, मुझे उसके सारे कंटेंट्स रीड करने हैं जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। इसका मतलब आप अपने प्रोग्राम में चेक भी लगाओगे कि कहीं एंड ऑफ फाइल तो नहीं आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो रीडिंग वाला काम है वो एक वाइल लूप के अंदर होगा। आप फाइल को रीड करोगे, वाइल लूप के अंदर रीड करोगे। वाइल लूप के अंदर क्यों रीड करेंगे, क्योंकि हम कंडीशन चेक करते रहेंगे कि जब एंड ऑफ फाइल आ जाए तब उसके बाद आप लूप में से बाहर आ जाओ। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि एंड ऑफ फाइल कैसे चेक होती है। गेट लाइन फंक्शन आपकी स्लाइड सेट 1 में है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने गेट लाइन वो देखा है वहां पे। गेट लाइन फंक्शन एक लाइन को रीड करने के लिए है। गेट लाइन कब तक रीड करता है एक लाइन को, जब तक उसको बैकस्लैश n नहीं मिल जाता। तो आप ये क्या करेगा, गेट, आप इसको इनपुट स्ट्रीम के साथ यूज कर रहे हो गेट लाइन, तो ये फाइल की फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, जैसे ही इसको बैकस्लैश n मिलेगा बस वहीं वहीं तक रीड करेगा। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न अबाउट गेट लाइन इज, गेट लाइन को जैसे ही बैकस्लैश n मिलेगा ये इसको रीड करेगा और डिस्कार्ड कर देगा, रीड कर देगा और डिस्कार्ड कर देगा। मतलब अब फाइल के अंदर डेटा ऐसे पड़ा है, पहले इंडिया, फिर यूके, फिर साउथ कोरिया। ठीक है, इसने फर्स्ट लाइन रीड की इंडिया, यहाँ इसको बैकस्लैश n मिला, हम साथ के साथ वो लाइन को कंसोल पे दिखा भी रही हैं, तो वो लाइन कैसे दिखेगी, फर्स्ट लाइन इंडिया। सेकेंड लाइन जब इसने रीड की, इसने बैकस्लैश n तक रीड की, मतलब लाइन के अंदर अब क्या आ गया, यूके आ गया, लेकिन वो बैकस्लैश n रीड होके डिस्कार्ड हो गया, तो जब आपकी लाइन प्रिंट होगी वो इसके साथ ही प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो बैकस्लैश n अपनी तरफ से दिया है, ताकि जब फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाती है ये यहाँ ना प्रिंट हो, यहाँ प्रिंट हो। क्यों, क्योंकि गेट लाइन जो है वो बैकस्लैश n को रीड करता है बट उसको डिस्कार्ड कर देता है, उसको प्रिंट नहीं करता, उसको इसमें लेके नहीं जाता। लाइन में सिर्फ क्या आया होगा, इंडिया आया होगा, बैकस्लैश n नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद ये चलता रहेगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आएगा। एंड ऑफ फाइल अब हम सीखेंगे, एंड ऑफ फाइल को चेक करने के 2 तरीके हैं, 2 वेज। आसान तरीका ये है कि जिस स्ट्रीम के साथ आपने अपनी फाइल को, जिस इनपुट स्ट्रीम के साथ आपने अपनी फाइल को कनेक्ट किया है, फाइल में ये लिख दो, ये 0 रिटर्न करेगा जब एंड ऑफ फाइल आ जाएगा। तो जब while 0 इज फॉल्स है ना, तो ये लूप में से बाहर आ जाएगा, सिंपल।
एक तो आप ये यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है बेटे? दूसरा तरीका है EOF फंक्शन। ये EOF फंक्शन क्या है? ये EOF एक मेंबर फंक्शन है। कहाँ पे है? स्ट्रीम क्लासेस में है। अगर ये एक मेंबर फंक्शन है, इसको इन्वोक कैसे करोगे? fin.eof। ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है? ये ऐसे इन्वोक करते हैं इसको। मेंबर फंक्शन है ना, इसको ऐसे इन्वोक करोगे। ये फंक्शन रिटर्न करता है नॉन जीरो। कब रिटर्न करता है बेटे नॉन जीरो? जब एंड ऑफ फाइल आ जाता है। अदरवाइज ये हमेशा क्या रिटर्न करता है? जीरो। ये उल्टा चलता है। अगर आप स्ट्रीम का नाम लिखोगे वो जीरो रिटर्न करेगा एंड ऑफ फाइल के आने पे, बट ये फंक्शन नॉन जीरो रिटर्न करता है जब एंड ऑफ फाइल आता है। तो वाइल वाली जो कंडीशन है, अगर आप EOF फंक्शन यूज कर रहे हो तो क्या लिखोगे? वाइल fin.eof। यस, क्या लिखोगे? वाइल नॉट दिस। वाइल नॉट दिस। क्यों? क्योंकि ये हर बार क्या रिटर्न कर रहा है? अभी जीरो रिटर्न कर रहा है। फाइल में डेटा है, जैसे ही एंड ऑफ फाइल आया इसने कुछ भी नॉन जीरो रिटर्न कर दिया। नॉट नॉन जीरो मीन्स जीरो, तो लूप ब्रेक हो जाएगी। तो अगर आप EOF फंक्शन यूज करना चाह रहे हो तो सेम कंडीशन को कैसे लिखोगे? वाइल नॉट fin.eof, like this. So these are the two ways how you can check end of a file. End of file check करने की जरूरत कब पड़ती है? When we are reading files. When we are reading files. Got it? So now I am done with the reading. मैंने कंट्री फाइल को रीड कर लिया है, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया। अब सेम इनपुट स्ट्रीम के साथ मैंने कैपिटल फाइल को ओपन किया है और मैं अब उसको रीड कर रही हूँ एग्जैक्टली द सेम वे जैसे कंट्री फाइल को रीड किया था। बाद में मैं उसको भी क्लोज कर रही हूँ। दैट्स इट। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम जो आपको दिख रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके पहले वाला जो पार्ट था दैट ऑल वाज राइटिंग टू अ फाइल। ओके, दैट ऑल वाज राइटिंग टू अ फाइल, सॉरी। हाँ, यहाँ से प्रोग्राम का आउटपुट शुरू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम रीड करना शुरू कर रहे हैं। कंटेंट्स क्या है फाइल के? यस, उसने लाइन के अंदर रीड किया और हमें दिखाया लाइन वाइज लाइन। ये बैकस्लैश सी आउट की वजह से आया है, गेट लाइन की वजह से नहीं आया है। हालांकि हमने इंडिया के बाद बैकस्लैश एन डाला था। गेट लाइन ने रीड किया होगा बैकस्लैश एन को, बट इसने डिस्कार्ड कर दिया होगा। ठीक है, जब हमने ये फाइल रीड कर ली, हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमने कैपिटल फाइल को ओपन किया था और हमने ये लिखा कंटेंट्स ऑफ कैपिटल फाइल आर लाइक। तो इसने सारी कैपिटल्स दिखा दी। ठीक है बेटे? यस, एनी डाउट स्टिल नाउ? प्लीज फील फ्री टू आस्क, स्पीक अप। No, ma'am. So I think we have done file stream classes, how to open a file. We have done two ways. One is constructor method and the other is open function. You know, then we see how we can work with a single file, then working with multiple files. But also we did one more thing. We learn how to detect, yes, end of file. End of file. So I will spend one more lecture on file handling. In that lecture, I am going to discuss file modes. दो मोड्स आपको ऑलरेडी आ गए हैं। मोड को डिफाइन लिखते कैसे हैं? iOS ऐसे करके, उसके बाद ये इनपुट मोड है बेटे और ये आउटपुट मोड है। ये डिफॉल्ट मोड्स हैं। इसके अलावा 5-6 मोड्स जो रह गए हैं, आई विल डिस्कस दोज एंड देन वी विल डिस्कस फाइल पॉइंटर्स। कभी आपने किसी भी फाइल को ओपन किया है, किसी टेक्स्ट फाइल को? यस और नो? जब आप एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हो, आप उसमें, अगर आप उसमें ध्यान से देखो तो आपको कैसे पता चलता है कहाँ लिखना है? उसमें एक लाइन ब्लिंक सी करती है, ऐसे लंबी सी या ऐसे कुछ, जिसकी वजह से आपको पता चलता है ना उसकी करंट लोकेशन क्या है।
तो इसी तरीके से जब आप अपने प्रोग्राम के थ्रू एक फाइल को ओपन करते हो, कहाँ लिखना है, फाइल किस लोकेशन पे ओपन हो रही है, ये सब चीजों का ट्रैक कौन रखता है? वो जो ये लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? फाइल पॉइंटर्स। एक फाइल को आउटपुट मोड में खोलते हो तो आउटपुट के लिए अलग पॉइंटर होता है, इनपुट के लिए अलग पॉइंटर होता है. सो वी विल डिस्कस दीज फाइल पॉइंटर्स एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम फंक्शंस to manipulate these pointers. There are just 2 pointers and we will study 4 functions to manipulate these 2 pointers. Okay, and then we will discuss the difference between text file and a binary file. These are small topics, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, so we will cover these in next lecture. One more thing is left, which is your homework for after today's class. जो भी आपको codes भेजी हैं, go through those codes and wait, मैं अभी दिखा रही हूँ आपको आपका homework. You have to do it, okay? So this is your homework that you have to do. You can take a snapshot or whatever you like. Numbers को, number of characters को count करने के लिए, yes, what will you use? Get C. ठीक है. Number of words को count करने के लिए you see how you will count number of words. Number of lines के लिए get line को आप use कर सकते हो. एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए you have to write a C++ program. So just try these, okay? Try these codes. इनमें से कुछ कोड्स तो शायद आपकी स्लाइड्स में डायरेक्टली उनके हिंट्स दिए हुए हैं, हाउ टू राइट. सो गो थ्रू दोस, बट यू हैव टू डू इट. कैसे करें, कब करें, नॉट माय कंसर्न. ओके, फाइन. So I'm concluding today's lecture. Anything you want to share? Last time I'm asking anything. Speak up. Any doubt? Other than course, you want to talk something about? Yes? Astik, Garima, Gurleen, No, ma'am. Harshita, Keshav, Navteg, Nimrat, Sahil. No, ma'am. Everything is clear, bete, all of you? Yes, Okay. ma'am. If later on, if you feel any doubts in any code, you can just mail me, okay, or text me. Okay. Now you can leave the class. Bye. God bless you all. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye.